दोस्तों, जस्ट पिक्चर दिस कि आप अपने ड्रीम आईआईएम के अंदर जा रहे हो एंड यू आर वेल सेटल्ड। आप केस कंपटीशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, प्लेसमेंट्स अच्छा लग गया, सब सही चल रहा है। आई मीन इट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, है ना? बट इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई डोंट थिंक सो। Here is something nobody tells you about MBA, and these are my personal, I would say, experiences that is shaping this whole video right now. There's always pros and cons, and इस वीडियो में मैं बात करूंगा वो सारे mistakes जो मैंने किए, as well as the things that went right. Hello everyone, my name is Hemant, and I have just passed out from IIM Kozhikode batch of 2025 PGP. एंड लाइक आई सेड, इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, क्या सही गया, क्या गलत गया, और अगर मैं फिर से एमबीए करता तो मैं उसे किस तरह करता। सो स्टिक टू द लास्ट, बिकॉज इफ योर एमबीए इज गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ, दिस वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपने देखा होगा कि अभी पूरा समाज थ्रिल हो रखा है, हम्बल हो रखा है कि यार वो लोग एक अपना कॉलेज ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे कैंपस लाइफ जिएंगे, कोई अपना प्लेसमेंट्स के बारे में डाल रहा है कि मेरे को ये प्लेसमेंट मिला, मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया, एंड एवरीथिंग लुक्स सो गुड। बट मैंने खुद इतना कुछ किया, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बिल्ड किया, मैंने जीडीपीआर कोर्स चलाया, मेरे खुद की प्लेसमेंट लगी, मैं प्लेसमेंट कमिटी में था, मैंने बहुत कुछ नया ट्राई किया। बट there are a lot of things that went wrong in the background which no one talks about, which gets filtered out in the noise. And I am here to talk about exactly those things in front of you. The biggest regret that I have, and I still talk about it very openly, is not taking my academics seriously. At the end of the day, MBA is an academic degree, and especially HR subjects तो रियल लाइफ में इतने ज़्यादा काम आते हैं कि जब आप कॉर्पोरेट में घुसते हो या आप काम करना शुरू करते हो, तब आपको समझ आता है एचआर सब्जेक्ट्स को तो हमने बिल्कुल हल्के में ले लिया था। फॉर श्योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स आपको हेल्प करता है, केस कॉम्पिटिशन्स आपको हेल्प करता है, पीयर लर्निंग भी आपको हेल्प करता है। बट देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे सीजीपीए बहुत मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ शॉर्टलिस्ट। फॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट द केस इन कोरिकोड, सो आई वाज सेफ। सेकेंडली, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा डिपेंड्स ऑन योर सीजीपीए, ठीक है? फिर डीन्स मेरिट लिस्ट हो गया, योर इमेज इन फ्रंट ऑफ योर टीचर्स हो गया। A lot of things in those sense also matter, and at the end of the day, we have come in MBA to study, right? Apart from all other things, study should be a major block, but I don't know why it did not become my major block. So, most of the things that we apply in case competitions in real life also are coming from the theories that are being taught by the teachers, but we tend to ignore them and बाद में फिर जाके यूट्यूब पे उसी को देखते हैं। अगर आप जा ही रहे हो क्लास, अपना टाइम स्पेंड कर ही रहे हो, तो केस ब्रीफ पढ़ के जाओ, वो बस सेशन में ध्यान लगाओ क्लास में बैठ के। दिस इज समथिंग आई एम रियली गिल्टी ऑफ, बट आई कैन नॉट चेंज इट। Here are the next few mistakes. The second mistake, which a lot of people might be making right now, is being too chill too early. So आप बहुत सारे ग्रुप्स में होंगे, जो भी कन्वर्ट हुआ है, आप अपना बैच ग्रुप ज्वाइन करोगे, एंड देयर यू आर योर ट्रू सेल्फ, आप मजे ले रहे हो किसी के, आप कुछ कर रहे हो, बट वॉट यू डोंट रियलाइज इज द फर्स्ट impressions मैटर a lot, and that is why you should let people get comfortable with your way as a human, know you as a human, and then only you can cross some boundaries. This is something I again I'm guilty of कि मैंने शुरू से ही खुद को बहुत रॉ रियल रखा, तो sometimes what happens, people do think कि नहीं ये तो बाउंड्री ब्रीच कर रहा है, ठीक है? एंड a follow up on that, third is not wearing good clothes. So if you go to class wearing good clothes, you just remain in good clothes, then there's a certain personality that gets attached to you. MBA is the best time where you can develop your personality, get in shape. तो मैं जिम भी नहीं गया, वो भी मेरा एक बहुत बड़ा रिग्रेट था, ठीक है? You can start writing, you just present yourself well, just show up well, and ये exact चीज़ मैंने मिस की। So if you're going in MBA, definitely comfort matters, to get comfortable clothes, but हाँ, थोड़े से अच्छे दिखने चाहिए so that your batch or anyone who is seeing you should have a good sense of you. There's so many times that uh, EPGP people came, senior people came, and मैं भाई उतना appropriately ड्रेस नहीं था कि मैं उनसे जाके बात करूँ। So you will miss all the chances if you're not well prepared. So just be well prepared in that sense. I have talked about academics, I have talked about our appearance, gym, how we should have a conversation, let people be comfortable. The third thing, and I'm creating baskets, I'm not just listing it down like that way. Third thing that I'm really, really
guilty of is not interacting with my seniors much. In the first 3 months, when most interaction happens with the senior, primarily due to summer internships, TV processes, and everything, तब मैं placement committee में था, and that was the reason why I could not interact with them, because we were bounded by the rule. But after I left placement committee, I had a chance कि ठीक है जाके बात कर सकते हैं, but there were no topics as such. तो मेरे लिए awkward हो गया था और मेरे को उतना अच्छा small talk करना नहीं आ रहा था. So maybe I missed that opportunity. But you know, your seniors are the best gateway to network, to industry professionals, to any kind of help you need. And that is why building a good relationship with senior matters a lot. But again, a follow up to this in the same basket is maintaining professors relationship also matter a lot. So there are a lot of people, जो professors के बहुत चाहते होते हैं, ठीक है, and they also get a lot of opportunities. So every professor has a few people from all the batches who they hold very dear and they are still in touch. So I remember कि मैंने एक LinkedIn पोस्ट पढ़ा जहाँ पे किसी एक इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर ने उस पर्सन के प्रोफाइल में एक रिकमेंडेशन डाला था, एंड someone saw that recommendation and they were a good student and they liked the professor a lot, so they just picked that person up and that person got an opportunity which they would not have got अगर वो प्रोफेसर ने उस रिकमेंडेशन को नहीं लिखा होता. Professors are doing day in, day out research in their field. They are masters of their field. You should definitely build good relationships with them, not just with the thought कि आगे जाके काम आएगा, but just because you have got this opportunity to be like a less like a student and more like a brother or sister with them. So take this opportunity. Don't shy away. The fourth thing, which was problematic, and I realized this in first year myself, is the illusion of productivity. तो मैं हमेशा busy रहता था, कुछ ना कुछ काम करते रहता था, but there were a lot of nights in which I was just awake till 3 or 4 a.m. and it felt like ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, but actually मैं कुछ नहीं कर रहा था. So I mean बहुत लोग इसका मजाक उड़ा सकते हैं, but build a calendar, try to stick to it, राइट, और जस्ट बिल्ड अ नोशन टेम्पलेट जहाँ आप लिख रहे हो कि आपको आज के दिन क्या क्या करना है. इट हेल्प्स अ लॉट इमेंसली बिकॉज व्हेन यू नो you are in command of your time, then you can do a lot more things that you would not have done. So being in command of your time is very very important. Fifth is, मेरे को लगता है काश मैं फॉरेक्स जाता, एंड आई काइंड ऑफ रिग्रेट इट, आई काइंड ऑफ डोंट. मेरे को पीपीओ नहीं मिला तो एक वो था, राहत सा हो गया था कि यार ठीक है चलो फॉरेक्स नहीं गया, मैंने यहाँ बैठ के प्रिपरेशन कर लिया. बट एवरी टाइम आई टॉक टू पीपल दे टेल दैट यू शुड ट्रैवल, एंड आई हैव बीन इन कॉन्वर्सेशन विद पीपल फ्रॉम आउटसाइड एंड दे से माइंड ब्लोइंग स्टफ कि यार ये सब भी हो रहा है दुनिया में एंड हमें नहीं पता क्योंकि मैंने ये चीज़ कभी देखा ही नहीं. आई डिड नॉट कॉन्सेंट्रेट मच ऑन CGPA. I did not get a really good Europe college, so I had to drop it out. And then the thing is, I did not go to Forex. खर्चा होता वो बात है, but that experience would have changed something in me. Eventually, I went to Malaysia during my grad trip and we saw a lot of things. मेरे को देख के लगा यार ये क्या हो रहा है. So the world outside there is very big, and if you get a chance, if finances is not a problem, then I'll urge you to go have a Forex trip because that will change the way you see things. You are there for 5 semesters in your college, so 1 semester अगर आप बाहर चले भी जाओ, आपकी दोस्तियाँ या आप इतना कुछ मिस आउट नहीं करोगे, they will still be intact. एंड फाइनल है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेला. सो सी, as I told before that MBA is a time when you can get in shape, you can build your personal brand, you can do everything you wanted. Just treat it like a 2-year vacation and do everything you wanted to do in your life but you did not get time to do. ठीक है, that is actually MBA. तो मैंने ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेले, मैंने जूनियर्स से इंटरेक्ट नहीं किया, ठीक है. एंड सबसे बड़ी बात, हमारे कॉलेज ने बहुत सारे रिसोर्सेज दिए थे, पेड रिसोर्सेज, द कैन, द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट वगैरह वगैरह, एंड आई डिड नॉट यूटिलाइज देम, आई डिड नॉट स्टडी देम. So this is the time when you can build a reading habit, when you can get the knowledge you wanted. You can just sit in library and browse through the books you always wanted to read, but I did not leverage it. Please do. You will miss those moments because once you are in corporate life, once you have started working, you will rarely find time to do something that you really like. I am fortunate I am able to find time for YouTube, but you may or may not. But यार, that's not all. ऐसे मैंने अपनी गलतियां तो गिना दी, but there are a bunch of things that I got right. ठीक है.
The first of it would be to concentrate a lot on case competitions. I really became an addict of it. मैंने 50 प्लस केस कॉम्स किए, बहुत लोगों से मिला, थोड़े बहुत पैसे कमाए, बहुत कुछ सीखा। टीचर्स से भी उसी बहाने बात हो जाती थी, कभी सीनियर्स हो जाती थी। मैंने बहुत लोगों को रीच आउट किया, ठीक है? हेल्प माँगना एक बहुत बड़ी वो तो स्ट्रेंथ वाली चीज़ होती है जो मैंने किया। सो ऑलवेज़ रिमेंबर यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प बिकॉज़ यू कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। सो इफ यू आर शाय इनफ कि भाई इससे कैसे पूछो, हेल्प कैसे माँगू, बेशर्म बन जाओ एमबीए के समय and just go out and seek help from anyone you want, be it your batchmate, someone from outside college, even the staff in your college. Just go and पूछो। पूछने से काम होगा। You miss 100% of the shots you don't take, and not asking for help is definitely a crime that you are doing to yourself. Second is definitely that I built a personal brand. I built my YouTube channel. I had a stream of income. Yeah, I almost earned 4.5 lakhs in these 2 years. And उससे ही मैंने अपना मलेशिया ट्रिप स्पॉन्सर किया, मैंने अपने पेरेंट्स को घुमाया केरला ट्रिप, मैंने अपने सारे ट्रिप स्पॉन्सर्स किए, मैंने गैजेट्स लिए, ठीक है? And that feeling where you are earning while others are burning is also very, I would say, liberating. आपको लगता है कि हाँ यार आप कुछ कर रहे हो, you are putting the skills to use that you have been learning every day, the management skills. So MBA is again the best time for you to build stuff, for get a personal branding done, to start something that you have always wanted. Don't miss out. Third is trying a lot of new things. So I tried swimming for the first time, table tennis for the first time, foosball for the first time. ठीक है, मैंने stand up comedy की, something I always wanted to do but I did not ever get a chance or did not ever get the, I'd say, power to do it. ठीक है, मैंने जाके stand up comedy की, मैंने स्टेज पे डांस किया, वो मैंने काफी बार किया, बट फन डांस स्टेज पे किया, ठीक है। क्लासरूम में प्रेजेंटेशन दिया, कितना सब कुछ ही ऐसा किया जो मैं पहले शायद कभी नहीं किया था। इनफैक्ट जेन एआई में मैंने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया, एंड दैट वाज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई गॉट दिस जॉब, बिकॉज़ आई वाज़ सो गुड एट एआई एंड आई स्टिल फील कि देयर कुड बी सम ऑफ माय बैचमेट्स हू आर बेटर देन मी, बट आई एम आल्सो वेरी गुड एट व्हाट आई डू। सो दिस इज़ अगेन द टाइम फॉर यू टू लर्न द स्किल्स दैट यू वांट टू बिल्ड, बिकॉज़ ऑनेस्टली इतना फ्री टाइम वापस कभी नहीं मिलने वाला। द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट राइट इज अवॉइडिंग पीयर प्रेशर। तो यार कोई ट्रिप्स पे जा रहा है, कोई पी रहा है, कोई फूक रहा है, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, एंड इट ऑलवेज मेक्स यू फील कि आई एम मिसिंग आउट। आई मीन आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इफ यू आर स्लीपिंग मोर देन 4 आवर्स इन एन एमबीए तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। दैट कुड बी ट्रू, बट इफ यू नो व्हाट यू रियली वांट टू डू, इफ यू आर क्लियर कि मेरे को ये सब करना ही नहीं है जिस पे वो लोग टाइम दे रहे हैं, देन थिंग्स विल बी स्मूदर फॉर यू। सो what I request you is sit down, ask yourself कि यार मुझे क्या करना है, and then don't fall into the peer pressure. कोई आपको पिलाना चाहता है, मत पियो। Fortunately मेरे दोस्तों ने मुझे कभी force नहीं किया and they still made me feel included. But a lot of people feel excluded क्योंकि वो पीते नहीं, फूकते नहीं। Don't get into this trap. This will only harm you in the long term. Know your priorities and then find the people who have the same kind of priorities, stick with them. And if your people are accommodating enough कि वो आपकी priorities समझे, आपको force नहीं करे, still आपको included feel करे, cherish that friendship. It's going to last forever. And I think final thing that is not a very significant thing, but it was for me, is I always in every Sunday I used to give a mock and I did not lose the touch. So मेरा एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था, जो मैं वो केस फॉर्म्स में हेल्प किया। मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्त को जॉब्स के एप्टीट्यूड में हेल्प किया। खुद से एक सेंस ऑफ फीलिंग आती है कि हाँ यार अच्छा लग रहा है। सो यू नो जस्ट बी इन टच विद एप्टीट्यूड इफ यू आर of if you're looking for case competitions and everything. I wouldn't say it is a very big thing, but हाँ, this is everything that I think went right for me. And I'm really grateful that, I had the chance to experiment. I had the chance to do a lot of things. And I hope this video was helpful for you. If you like this video, you will definitely like how to make a CV that I am attaching in the description, as well as you can go and see by the end of the video. And also how is life at placement committee. So if you really want to get into placement committee, watch that video before you get in so that you have real expectations set up. Thank you so much for being there on the channel. I'll see you in the next video. Till then, all the best. Bye bye.